So again, today we have mostly descriptive kind of thing. We don't have any derivations or any other thing. So self descriptive and diagram that we have to understand. So first, let me just write it down. Okay, so first we will discuss what are the problem in the gas detector. तो सबसे पहले हम गैस डिटेक्टर के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. That is why we will shift to the scintillator. Okay, so let me just discuss one by one the problem which we face in the gas detector. So what happens, first of all, when you have a gas detector, just जितने भी गैस डिटेक्टर हैं उसमें डेंसिटी की एक बिग प्रॉब्लम है. मींस ऑब्वियसली दे आर गैस, सो गैस इज ऑलवेज हैविंग अ lower density. Means if you want to convert your incoming ion energy into a ion and pair, then you have to have an interaction which should be something like the energy should not be wasted in any other form. Everything should be converted into electron and ion pair. It means the particle, if it is having a more energy which is going into the detector, that is radiation which is going into the detector, it means it has to travel a certain distance. Then only it will interact with more number of particles, because that mostly follow the straight line. So it has to move to a larger distance when you are taking a gas, because its density is less. It encounter lesser number of atom in its path when it is moving or forwarding towards any particular direction. So the what you can do, instead of having the gaseous system, if you fill it with liquid or solid, then the size of the detector will decrease. But even though if you have a incoming particle is having a very good amount of energy, then means then also it will travel a certain good amount of distance. For example, if you have a neutrino travels so much of distance, then they start doing a reaction. So we have to look at those things also. We don't have to only detect प्रोटॉन. हमेशा प्रोटॉन को ही डिटेक्ट करते रहेंगे तो हमारा आगे काम नहीं चलेगा. वी हैव टू गो to the subproton particle. Means if you break the proton, or if you break the nuclei, and if you break the constituent of nuclei also, then also you have particles, and we have to detect those particles. They are further more light and they travel with higher velocity, they have more energy. So we need to have a either larger size of the detector, or you fill with a certain material which have a higher density. Now what is the problem if you do that? गैस तो एक इंसुलेटर मटेरियल है. मैक्सिमम जो गैस है दे डोंट इंटरेक्ट. अगर एक आपका कोई गैस पार्टिकल आयन पेयर में कन्वर्ट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, और आपके 10% आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया गैस का जो भी आपने वॉल्यूम लिया है, स्टिल दैट इज नॉट कंडक्टिंग. Still it will not be a conducting until unless every particle has been uh, converted into a ion and electron pair. So हमारे पास एक ऑप्शन बेटर ये था कि गैस इज primarily a insulator. So just so in that case it is good कि भाई हमारा आयन पेयर तो जनरेट हो जाता है और करंट भी जनरेट नहीं होता. मींस वी डोंट हैव अ फ्लो ऑफ करंट व्हेन यू हैव अ गैसेस सिस्टम. तो एक महीने में इट इज बेटर कि वो इंसुलेटर है, दैट इज ओके, बट उसका डेंसिटी बहुत कम है. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम. एक एडवांटेज है तो दूसरा डिसएडवांटेज होगा, दैट इज ऑलवेज देयर. सो व्हेन वी शिफ्ट टू अ लिक्विड और टू अ सॉलिड, व्हाट हैपेंस कि सॉलिड में तो बहुत प्रॉब्लम है, लिक्विड में तो फिर भी इजी है. नाउ इमेजिन अ थिंग,
Again, if you fill with a liquid and your particle is going into the liquid, means the ion is going into the liquid, it is coming in and it is generating a electron and ion pair. Since the density has increased, now the motion of electron and the motion of ion will be hindered because the density has increased. So they will encounter more number of collision before reaching to anode or cathode. This is a big problem. It means what you want कि दूसरा एक और सिस्टम एक और आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है जब आप डेंसिटी इंक्रीज करते हो. वेन डिग्राफ में अभी बच्चों ने डिस्कस किया दैट इज नॉर्मली फिल्ड विद इंसुलेटर SF6 यूज किया and they are filled because they can sustain a very high potential. And your design of the whatever the detector you design, it always have an electric field to collect those ion and electron. उसके कलेक्शन के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है. तो whenever you switch to a whenever you switch to a solid or liquid system, there is a possibility that your system itself start carrying a current. अगर आपने कोई ऐसा लिक्विड यूज कर लिया है या सॉलिड यूज कर लिया, मैक्सिमम होते हैं. If you apply a good amount of electric field, for example 10 to the power of 6 volt per meter, so there is a chance of discharge. गैस में डिस्चार्ज होने के चांस कम होते हैं, बट लिक्विड और सॉलिड में डिस्चार्ज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो हमारे पास जब भी हम शिफ्ट हो रहे हैं ना, हमारे पास दो बड़े प्रॉब्लम है एंड बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. व्हाट वी रिक्वायर अ मटेरियल इन व्हिच द ion and electron should move freely without any hindrance, without any good number of collision. And if we are saying that they should move freely, means I need a conducting system. And along with that, simultaneously, what you require that at a certain electric field, an electric field is not so small, it is 10 to the 6 or 5, something around that. When you are applying that electric field to that solid or liquid, it should not conduct. इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई भी कर दिया, कंडक्ट भी नहीं करना है, बट जो इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर जनरेट हुए हैं ड्यू टू योर रेडिएशन, दैट शुड आल्सो ट्रैवल. तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है और आप कह रहे हो कंडक्टिंग भी नहीं है. तो हमें वो मटेरियल ढूंढने हैं जिसमें दोनों सिस्टम फॉलो हो सके. इट शुड नॉट बी कंडक्टिंग and it should also make a path for all those electron and ion to be get collected at the respective whatever the cathode or anode you have इलेक्ट्रोड यू हैव कनेक्टेड. तो दोनों जो है ना बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. तो थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड आयन, वी डू समथिंग एल्स and we try to have an interaction of radiation with matter in such a way that they should produce light. लाइट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लाइट इजिली ट्रैवल कर लेगा और लाइट भी ट्रैवल उसी सिस्टम में करेगा जिसमें वो ट्रांसपेरेंट होगा. अगर आपका सिस्टम ओपेक है तो इट विल स्टॉप, इट विल बी कंज्यूम्ड, इट विल बी absorbed by some other atom. But if the atom or if the collection of your whatever the solid liquid you have selected, if it is transparent to a particular light, means infrared के लिए हो सकता है, visible के लिए हो सकता है, ultraviolet के लिए हो सकता है या किसी और रेंज के लिए हो सकता है. If it is transparent, then light can travel within that medium. तो हमारे पास प्रॉब्लम तो आया, और उस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन भी हमारे पास ऑप्शन है. हमारा जो आयन आएगा, मींस जो रेडिएशन एंटर करेगा हमारे सिस्टम में, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एंड आयन पेयर, दे विल प्रोड्यूस लाइट. एंड नाउ वी हैव टू कलेक्ट दीज लाइट. अब हमारा काम क्या है? वी हैव टू कलेक्ट दीज लाइट. तो लेट मी जस्ट रीड व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज. इफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन सम आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर अ सिंटिलेटर्स. इस ऐसे मटेरियल को हम सिंटिलेटर कहते हैं. तो one by one I just read out the points, that what are the important points that is requirement, that is an important characteristic of a scintillator material that will be used in the scintillation detector. So let us first one, it should convert. यहाँ तक क्लियर है? मतलब थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर है कि why we are shifting from gas detector to a solid or liquid detector, and what are the problem we are carrying with that. When we are doing the shifting, we have a certain problem. Is it clear to you? Is that clear to you? Then we will go to the properties of scintillator, and then we will go to the process of scintillator.
यस नो कुछ बताओगे कि जब स्विचिंग हम कर रहे हैं गैस से लिक्विड या सॉलिड में तो क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, उसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई हमें करना है. नो क्लियर नहीं हुआ. या मेरी आवाज भी आ रही कि नहीं आ रही है, या मैं बोलते जा रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है. Clear, you are giving only gestures. Okay. The problem is your material should be conducting for your electron and ion which has been generated, and it should also be a good insulator simultaneously so that the whatever the applied electric field you have applied there, it should not do a discharge. So they are contradicting statement. They are contradicting. They are not simultaneously. You don't have any material existing in both the state. Conducting bhi ho, insulator bhi ho. That is not possible. A bit conducting can be there, means you can call it as a semiconductor. They can be there and they will sustain certain electric field. So let me just go one by one with the properties of scintillator. Okay, so the first one, it should convert your kinetic energy of the charged particle which is getting into your scintillator into a gamma radiation or any particular detectable light. Means it should convert into a gamma radiation or a detectable light which you can easily measure that. तो लाइट में कन्वर्जन होना है, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट नहीं करेगा, आपका लाइट जनरेट करेगा. और लाइट जनरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, that whatever the reaction which is happening, that should not make the atom ionize, but it should make the atom go into excited state. आपका क्या होना है कि आपका जो रेडिएशन है वो जब इंटरेक्ट करेगा एटम से, तो इट शुड मेक योर एटम टू गो इनटू एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज इफ इट गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट इट विल एमिट रेडिएशन. दिस इज व्हाट द केस इज. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए. सेकेंड वन, दिस कन्वर्जन शुड बी linear with the light yield. Linear means if you have n number of means if you have means linear means something like this one. How much energy of the ion which is, or radiation, I will write radiation, that must be equal to n times of number of gamma photon. Yeah, you can say gamma photon or any photon. Say proportional hona chahiye. It should not be something like any function like this one, a plus b square and gamma plus c gamma square, something like that. ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be linear. तो आपका एनर्जी इंक्रीज हुआ तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स भी आपके इंक्रीज होने चाहिए. उसकी एनर्जी गामा की एच न्यू है, तो कितने नंबर ऑफ गामा फोटोन है, दैट इज समवेयर हियर. तो एच न्यू यहाँ कर एनर्जी ऑफ गामा रिप्लेस कर दें. आपको एनर्जी ऑफ गामा इज एच न्यू. So how many HNU, how many photons has been generated, that should be multiplied with n, directly proportional. So that should be linear. Sometimes it is non-linear, so we have to take care of that also. कि light जो generate हो रहा है किस function से generate हो रहा है. Third one, the medium should be transparent to the wavelength of its own light emission. Means whatever the atom which has gone into excited state, when they are dropping back to the ground state, they emit light. And that particular wavelength, whatever the h nu you have got, whatever the frequency you have got, whatever the wavelength you have got, for that wavelength your material should itself be a transparent. अगर वो opaque हो गया तो light it will never come out. तो light को उस material से बाहर भी आना है. It should not get absorbed within that system. अगर वो absorb हो गया तो we don't able to count them. तो count करने के लिए हमारे पास it has to come out from that particular material. So the medium should be transparent to that particular photon or that particular lambda you can say, or frequency you can say. The fourth one, the decay time of the induced luminescence should be short so that fast signal pulse can be generated. For example, कई बार ये होता है कि हम एटम को एक्साइट कर, लेजर का आपको प्रॉपर्टी पता है. लेजर, इफ यू हैव लर्नड अबाउट लेजर, आपने पढ़ लिया लेजर, हाउ द लेजर आर प्रोड्यूस्ड. लेजर पढ़ा है थोड़ा कि लेजर का प्रोडक्शन कैसे होता है. Yes, sir. So what is the process of laser production?
What is the product? सर वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है मेटास्टेबल स्टेट में उनको इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं फिर What is the time frame of means when they go into excited state, they have to come back to the ground state. What's the time? The time is. Can you suggest how much time it take to back to the ground state when it goes to excited state? नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो जब हम केमिकल रिएक्शन कोई करते हैं तो उस प्रोसेस में हार्डली टेक 10⁻⁻⁸ वो एक्साइटेड स्टेट में क्या, इट विल ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट इंस्टेंटेनियसली. देयर इज नो बिग टाइम, 10⁻⁸ का या नैनो सेकेंड्स के आसपास का टाइम फ्रेम होता है. लेजर में दैट गोज टू द मिली और फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स. इफ यू मे हैव लर्न अबाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक उसमें टर्म पढ़ा होगा आपने कि आपके नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट के एटम इट शुड बी मोर देन योर ग्राउंड स्टेट, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस अ लेजर. दिस इज वन ऑफ द कंडीशन मे बी यू हैव लर्न. और stimulated emission means once they go into excited state you have to stimulate them. वो खुद से नहीं नीचे आते हैं, they don't want to come back to the ground state. You need to stimulate them to get back into the ground state. And if you have more number of atoms in the excited state for certain duration of time and they all back to the ground state, you get a good intensity of light. That is why the laser are so intense. तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे फोटोन सेम कैरेक्टरिस्टिक के, सेम वेवलेंथ के, सेम कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशल कोहेरेंस सेम होने चाहिए और दे शुड प्रोड्यूस एट द सेम मोमेंट. सो दैट इज व्हाई वी गेट इंटेंस लाइट फ्रॉम द लेजर. ओके, तो लेजर डिटेल में बाद में पढ़ना कि लेजर पूरा डेरिवेशन भी होता है. यू नीड अ पॉपुलेशन इन्वर्जन, और जब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा यू डोंट हैव अ लेजर. तो लाइट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा है, फिर बैक हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर बैक हो रहा है, वॉट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम. सो यू डोंट गेट एन इंटेंसिटी of a good amount. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, that time should be very small. It should not be big. कई बार होता है कि atom goes into excited state and it take time to get back into the ground state. And what we have seen कि अगर हमें pulse output, जो हमारा output system connected है, जहाँ पे हमें current मिल रहा है, that takes certain time. Normally micro nanosecond के बीच के time में होता है. तो we take that much of time to measure a pulse. So if your luminescence means your this excited atom and back to the ground state, if it take more than that particular time, then you miss the counting of the photon. So आपका जो photon है, it should not take so much time, atom should not take so much time to get back into the ground state. It go into excited state, it should come back to the ground state so that the photon emit with a no time. तो ये एक कंडीशन है. अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं, दे टेक सर्टेन टाइम एंड दे रिलीज द फोटोन इन अ वेरी स्लो मैनर, दे टेक टाइम, तो आप उसका काउंट मिस कर जाओगे. आपका जो रीडिंग है उसमें उसकी काउंटिंग नहीं होगी. फोटोन तो जनरेट होगा बट इट विल जनरेट लेटर आफ्टर योर काउंटिंग हैज बीन डन. So this is the fourth point which you have to take care when you are choosing the material. The fifth one, the material should be good optical quality. This is not very much important, but at least good optical quality means if for example मे बी आप सभी ने वो पहना होगा, हाथों में कोई अंगूठी पहनी होगी, किसी ने रिंग पहना होगा, उसमें कुछ क्रिस्टल्स भी होंगे. नॉर्मली आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई वैसा नहीं होता है कि डोंट हैव एनी मैजिकल पावर, बट दे आर सम हैव ट्रांसपेरेंट, सम आर ओपेक ऑल्सो. तो दे आर गुड क्रिस्टल्स एक्चुअली. मीन्स यू कैन say that whatever the physical size you are looking at the material, if you go anywhere in that material, within that material, they have similar property. तो एक जिसको हम कहते हैं ना क्रिस्टल फॉर्मेशन या सिंगल क्रिस्टल टाइप का मटेरियल है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका सेंटीमीटर बड़ा एक क्रिस्टल है, तो कहीं पे भी आप चले जाओ इट विल लुक लाइक सेम. दैट इट डज नॉट हैव एनी, लेट मी जस्ट रिमूव द कॉपी फ्रॉम हियर. So it does not make any this defect kind of, means the optical quality should be good. Means whatever the light has generated at one corner, it should have a capability to reach to the other corner. तो बीच में कहीं डिफेक्ट होगा ना, तो उसमें लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज होने के चांसेस है. तो आपका जो क्रिस्टल होता है बहुत ही अच्छे से फॉर्म, अगर सॉलिड फॉर्म में बना है और लिक्विड फॉर्म में भी है, तो इट शुड बी नॉट हैविंग एनी बिग प्रॉब्लम विद इन द थ्रू आउट द लिक्विड. सो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. सो दैट इज कंसर्न विद द
material quality. That is in terms of कि आपने फॉर एग्जांपल आपके फोटोन ने 1000 आपके इनकमिंग रेडिएशन ने 1000 फोटोन जनरेट किए, and due to your system is not a good optical quality, some of the photon has been lost, you received only 500 photon. तो आपकी जो yield है, that is how much photon you are receiving for a certain energy, that yield will decrease, and yield decrease होगा तो आपका measurement pulse भी decrease होगा. So we have to make a material with a good value, means good optical value. Sixth point is normally the refractive index of the material which we choose is around your 1.5 to 1.7 or 6 kind of thing. जो ग्लास का होता है ना, उसी के आसपास का इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो मैक्सिमम हम लेके चलते हैं कि विजिबल रेंज में हमारे लाइट एमिट होंगे. जो हमारे जितने भी सीरीज होते हैं ना, बहुत कम में आपके यूवी होते हैं, या विजिबल या आपका इंफ्रारेड होगा. तो वी वांट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज मटेरियल शुड बी अराउंड 1.5, 1.6 or 1.7, समथिंग लाइक दैट. So these are the properties. These are some of the few properties of a scintillator detector. Okay, now the process. So first let me draw the block diagram. And if someone asks a question, maybe पूछते हैं कि exam की, what is the process of a scintillator detector? What happens and how we do the measurement? So then you have to make the block diagram and you have to explain the steps one by one, that what is happening. So the first thing, that the first part which is important in the scintillator is your, let me make it with different colors so that you should understand कि भी तीन पार्ट हैं उसके. First part is a chamber, and that chamber will have the scintillator material जिसमें आपका scintillator process होना है. तो एक चैम्बर है हमारे पास, इसमें या तो लिक्विड फिल्ड है या तो सॉलिड से हमने फिल किया हुआ. And that is actually nothing but a material which has been filled in this container. तो कंटेनर अगर लिक्विड के फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हो तो ये बड़े कंटेनर्स होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में यूज करते हो दे कैन बी स्मॉल कंटेनर्स. सो दैट इज हार्डली ऑफ अ सेंटीमीटर और फ्यू सेंटीमीटर साइज. और अगर आपका लिक्विड फॉर्म में है तो यू कैन गो इन टू मीटर ऑल्सो. 1 मीटर 2 मीटर के आसपास के बड़े कंटेनर भी होते हैं विच यू फिल विद द सेंटीमीटर. सो दिस इज फिल्ड विद द सेंटीमीटर, मीन्स दे आर फिल्ड विद द एटम्स इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. तो जो भी आपने मटेरियल चूज किया वो यहाँ पे डाल दिया. दिस इज द फर्स्ट, यू कैन से फर्स्ट पार्ट which is of a scintillator detector. Detector तो भी पूरा बनेगा, but this is the first part, first step, that is scintillator is filled in this one. And then you have another device or another thing which you have connected to this one, which is a small plate connected to this particular end. इसको हम black से fill कर देते हैं. Fill it with black one. So there is a plate, and that plate is something like a photo, which is photoelectric effect which we can see there. Means photoelectric effect kya hai? If you bombard light on some plate and you can get an electron. This is what the photoelectric effect, you know about that. कि भाई आपके कोई लाइट आपने उस पर बम्बार्ड किया है, वर्क फंक्शन से उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो दैट कैन एमिट अ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. So this is what, this is a photo cathode, you can say. So photo cathode has been attached to this one. एक end पे हमने photo cathode attach कर दिया. इसका purpose इतना है कि when the light will fall from this area to this one, it will emit a electron. It will emit electron. Okay. Now means light has been converted into charge. अब directly नहीं है, indirectly है. It is not converted directly. पिछले केस में हमारे पास directly conversion हो रहा था, इस केस में हमारे पास directly नहीं हो रहा है, indirectly हो रहा है. Then we have another device which is attached to this one, or you can say they are aligned along each other, and this is called a photo multiplier tube. Normally it is short form is photo multiplier tube, PMT. This is photo multiplier tube. So what happens, that let me make the radiation also. This is the radiation which is coming. Okay. So this is having certain energy, let us say E radiation. So having certain kinetic energy, and that goes into the scintillation. तो आपके scintillation material में आपका वो enter कर रहा है.
And during the track, normally what happens, they if it is you can say, if it is alpha, it will follow a straight path, but if it is beta, it will follow a zigzag path also. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मटेरियल हो सकते हैं अगर आपके पास कोई बीटा आता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस हो सकता है, बीटा माइनस हो सकता है, तो दे डोंट फॉलो द स्ट्रेट लाइन, बट दे विल डू सर्टेन zigzag path, so they will follow this kind of path and they will stop. And this follow irradiation means if it is alpha, then it will follow a straight line. So during the whatever the track that has followed, चाहे वो zigzag follow कर रहा हो, चाहे वो straight line follow कर रहा हो, तो during its motion within this scintillation, it has interacted with the different atom at different places. So during the interaction, a photon has been generated at different point. So I just make the photon. ठीक है, हमारे पास फोटोन जनरेट हो रहे हैं. फोटोन क्यों जनरेट हो रहे हैं? बिकॉज एंड दे आर जनरेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर नॉट जनरेटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, they are generating in all over the direction. Why this photon was generated? Because when the radiation get into the scintillation, the atom along the track will get not ionized, but they go into excited state. This is what the important thing. पिछले केस में सारे एटम आपके आयनाइज होते थे और इलेक्ट्रॉन आयन पेयर में they are converted, but here they are not converting into electron ion pair, but we try to do in such a way, this reaction should happen in such a way that photon should be emitted. Photon कब emit होगा? Atom आपका excited state में जाएगा, फिर वो drop back करके ground state में आएगा, तो it will emit a photon. And that photon emission could be of any direction. कोई जरूरी नहीं कि इसी एंगल पे होगा या उसी एंगल पे होगा, it doesn't matter. So when these photon has been generated, now this particular part means this green one which you are seeing the box, that is a good reflector. तो हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं इंटरनली. पॉलिशिंग करने से क्या होता है, देयर अ गुड रिफ्लेक्टर. So whatever the photon is hitting all these three side of the scintillator box, you can say, whatever it is boundary, whenever they are hitting, ultimately they have to reach to this particular plate. सारे फोटोन का जो पाथ होगा अल्टीमेटली इसी फोटो कैथोड पे आना है, बिकॉज दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय दीज थ्री पार्ट. They cannot be consumed. They do not do anything. They just get a reflection. So they go on doing the reflection and ultimately they reach to the photocathode. तो हमारा मेन जो फर्स्ट चैम्बर है, चैम्बर का ये पर्पस है, it should generate photons and these photons should be directed towards the photocathode. तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो हमारा पहला चैम्बर है, उस चैम्बर में हमारा लीनियर फैशन में मीन्स समथिंग लाइक दिस वन, मीन्स here the energy of radiation must be converted into n times h nu. जो भी आपका गामा फोटोन या गामा है या कोई भी फोटोन है, उसका जो भी आपका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, it should follow this one. Means n number of photon has been generated and you want to collect all those photon, means they all will be directed towards the photocathode. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Okay, so gesture is there that photocathode पे हमारे सारे photons आ गए. Now the photocathode, what it will do, it will generate electrons. सिंपल है, फोटोकैथोड पे आपके मटेरियल और अदर साइड पे जनरेट करेगा, नॉट ऑन द सेम साइड जो आप नॉर्मली यूजुअली आप जो डायग्राम देखते हो फोटो का इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि फोटोन आ रहा है और फिर वहीं से आपका वर्क फंक्शन से मींस इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड इफ इट इज एनर्जी इज मोर देन द वर्क फंक्शन. सो वी मेक सो थिन दैट the electron which is generated on this side, because this is filled and this is something like a vacuum. ये वाला एरिया वैक्यूम होता है, ये वाला एरिया आपका पूरा सॉलिड या लिक्विड से फिल्ड होता है. So normally the photon, if it is somehow generated in this direction also, they just destroy themselves. It is of no use. So we want these photons which is generated on the other side. Now there is a loss. If you have n photons which is hitting this photocathode, maybe n dash electron has been generated. कम होते हैं नॉर्मली, उसका यील्ड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. आपने 1000 फोटोन जनरेट किए, आपका जो रेडिएशन था उसकी जो भी एनर्जी थी, इट हैज जनरेटेड 1000 फोटोन एंड यू हैव कलेक्टेड ऑल दोस फोटोन ऑन ऑल हैव हिट द फोटोकैथोड, बट इट यू आर नॉट श्योर कि 1000 इलेक्ट्रॉन विल बी जनरेटेड एट द अदर साइड. सो देयर इज अ सम काइंड ऑफ एफिशिएंसीज गिवन टू दिस scintillator
कि भाई इतने ही फोटो कैथोड से हमारे इतने ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे व्हेन द n number of photon is hitting. So there is some loss, but we don't care about that loss. Okay, so we don't care about the loss. So what we do, and this जो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, इस फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में एक्चुअली इसका नेम जो है थोड़ा सा फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब का है, बट द नेम इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब होना चाहिए था, बट व्हाई हिस्टोरिकली इट इज फोटो मल्टीप्लायर, बिकॉज यू डोंट सी दिस इलेक्ट्रॉन, यू सी द लाइट ओनली, एंड लाइट हैज बीन गिविंग यू अ पल्स ऑफ अ वेरी इंटेंस वैल्यू, हाई करंट की वैल्यू देता है वो, बट हम फोटो मल्टीप्लायर नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर एक्चुअली। तो ये वाला जो पार्ट है ना, what it will do, for example, if you got 3 electron, for example, you started with 3 electron, and when they reach to the final electrode somewhere here, it is connected here, and there is a resistance, and then you have all the circuit, so you get a pulse here. सेम प्रोसेस जैसा हमारा गीगर मोलर में था, सब कुछ वैसी है। इस डिवाइस के बाद हमारे पास सिंपल सर्किट है जिसमें एम्पलीफायर वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है, और आरसी सर्किट है जिसको कलेक्शन टाइम भी लेना है, उस कलेक्शन टाइम में उसको रीडिंग लेनी है, उसके बाद फिर दूसरी रीडिंग के लिए रेडी होना है। So these electrons when reach to this, and this is not a big size, this is hardly of a 10 centimeter, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है, छोटा सा होता है। Have you ever seen photomultiplier tube? कभी गूगल पे डायग्राम देखा है उसका? There are of different different types, cylindrical होते हैं, spherical होते हैं, और अलग अलग शेप के होते हैं। Have you ever heard about this photomultiplier tube? No, sir. अच्छा, कभी सुना ही नहीं। ओके, व्हाट हैपेंस, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, इसी का सिर्फ ब्लॉक डायग्राम दोबारा एक बनाएंगे, इनके इस पार्ट का तो कोई अलग से ब्लॉक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दिस कंप्लीट इज अ scintillation detector, but we will make this in a more detail, and we will see that कि उसका डायग्राम क्या हो, how they are increasing the number of this photon, or you can say actually the electron, photon तो नहीं होता है, but it is increasing the number of electrons. Okay, so what happens that when they reaches to this cathode, we had generated at the photocathode, ये सारे photocathode पे generate हुआ है, and they reach to a final any anode, you can say, because this is obviously a positive charge, तभी ये electron यहाँ पे जाएगा। When they reach to this one, they amplify themselves, means there will be a number which is going to multiply with this 3. Starting में 3 थे, लेकिन यहाँ पे आते आते वो 3 million हो सकते हैं। This is a possibility that you only started with 3 electron, and these 3 electron are directly proportional to the energy of this radiation. अगर रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होती थी, 5 भी हो सकते थे, बिकॉज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ दिस फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय दिस प्लेट, और प्लेट तो आपने डिजाइन कर दिया है, तो वो कन्वर्जन हमेशा हर के लिए फॉलो करेगा। बट इफ दिस एनर्जी चेंजेस, देन दिस नंबर इज गोइंग टू चेंज, and then whatever you get, 1 electron, you get 2 electron, you get 3, or whatever you get, you just multiply with a million. So when you get million, so you get 3 million, अगर 2 थे तो 2 million हो जाती, means finally when you collect the current at this point, that is directly proportional to your energy. So you can easily predict what was the energy of the radiation, but यू आर डूइंग एवरीथिंग इनडायरेक्ट वे। पहले आपने फोटोन जनरेट किए, फोटोन से आपने इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, इलेक्ट्रॉन को भी आपने एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद उसकी मेजरमेंट की, सो दैट यू गेट अ फीजिबल अमाउंट ऑफ करंट। मिली एम्पियर्स में करंट होगा तभी आप मेजर कर पाओगे, नैनो और पिको में चलाएगा तो यू वोंट बी एबल टू मेजर, यू नीड अ मोर बेटर इंस्ट्रूमेंट, सो दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हम थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक अ फोटो मल्टी, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लाई मींस इट जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग, and we will see the detail of this one. First we will see the detail of photo multiplier tube, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कई बार सिर्फ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का ही एक्सप्लेनेशन आ जाता है विद ब्लॉक डायग्राम। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप ऑफ जो सेंटिलेटर है हमारे पास, जो लिक्विड सॉलिड अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हाउ द मैकेनिज्म इज वर्किंग ऑन, कि उसके अंदर मैकेनिज्म फॉलो क्या हो रहा है। बट पहले हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पे चले जाते हैं। इसके लिए मैंने सोचा था कि एनिमेशन बनाऊं, बट अभी टाइम नहीं मिला, बट लेट मी जस्ट make the block diagram here only. So how the photo multi, this process is clear to you, how the scintillation is working. The first one, your photon should be generated, and that too in the linear fashion, कोई स्क्वायर क्वाड्रेटिक या कोई अलग फंक्शन नहीं होना चाहिए,
logarithmic or exponential as a function. It should be linear. Then only you will able to predict the energy. And these photon, second step में क्या है? You have a photocathode. These photon hits this photocathode plate and you get the electron. And the next process, when you get this electron, you have to amplify the number of electron. Means you have to increase, you have to multiply the initial number of electron with certain number, but that is decided by the photomultiplier tube, and you finally get the pulse and you do the measurement. You get a pulse. And this will give me the value कि भाई आपने I naught क्या receive किया. तो you can easily predict कि pulse का width कैसा है, उसका height कैसा है, उन सारे से आप बाकी चीजें भी predict कर सकते हो. How much time of collection you have got, कि भाई मुझे इतना time लग ही जाता है हर एक रीडिंग को चेक करने में, तो रेडिएशन का मेरे पास जो इनकमिंग रेट होना चाहिए वो इस टाइम से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. इस टाइम के अंदर ही अगर आ जाता है तो आई वोंट बी एबल टू मेजर दैट. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि वी गिव द डेटा कि भाई इसका जो कलेक्शन टाइम है वो माइक्रो या फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड है या नैनो सेकेंड है. इट मीन्स you should use a source of a radiation whose time is less, means the rate of generation of alpha particle or beta particle is less than this value. Means micro में एक particle generate हो रहा है, एक microsecond में फिर दूसरा हो रहा है, तो वो उसको मेजरमेंट इजिली कर लेगा. अगर बहुत फास्ट रेडिएशन एमिशन हो रहा है, उसका रेट बहुत ज्यादा है, तो इट विल स्किप सर्टेन मेजरमेंट. ओके, सो दोज थिंग्स आर सर्टेन विच इज टेक्निकल पार्ट ऑफ द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. तो हम यहाँ पे आते हैं कि पीएमटी को हम डिस्कस करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. हाउ द फंक्शन, हाउ द जनरली वी लुक कि हमारे पास होता क्या है, हाउ दैट इज गोइंग टू वर्क, हाउ इट इंक्रीज द और एम्पलीफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमने गीगर मोलर में क्या किया था? गीगर मोलर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से वी गेट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, and avalanche process is there, and one electron is capable of generating n number of avalanche. That will give me a certain decided value of current at the output. तो वहां पे avalanche process है, यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसे ही process है, but the geometry is different. वहां पे हमारे पास single एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है. एनोड का हमारा डायमीटर हमने बहुत ही कम रखा है, उसका रेडियस बहुत 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 कम रखा है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द एनोड इज वेरी हाई. सो दैट इज वेयर वी गेट दैट काइंड ऑफ एवलांच. वहां पे एटम आपका गैसियस स्टेट में, यहाँ पे कोई एटम नहीं है आपके पास. यू डोंट हैव एनी एटम which is going to produce secondary electron, but we have plates, and that plate is going to produce a secondary electrons. So let me just make the photocathode, this multiplier block diagram. You have a cylinder kind of, circular भी होते हैं, जरूरी नहीं कि cylindrical form में हो. And this is your photocathode. This part, let me make it with black. This is your photocathode, from where the electron is being emitted. And within this cylinder, we have several, you can say, इसको हम डायनोड्स कहते हैं. वैसे तो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो जस्ट वी नेम इट एज अ डायनोड्स. They are called dynodes. So let me first make the dynodes. The first one is somewhere here, then next one, then next one, then next one, then next one, and next one. They are placed in such a way, and finally this one. So they are just metallic plates actually, and everything is sealed into a vacuum chamber. And the potential that you apply, अब यहाँ पे बहुत सारे electrodes आपके output पे आपको यहाँ पे visible होते हैं. Just like if you have seen the CRT, अगर CRT आपने देखा है cathode ray वाला, तो उसमें भी बहुत सारे electrode बाहर दिखते रहते हैं, और अंदर वो उसके कहीं कोई आपके हीटर के लिए जा रहा है इलेक्ट्रोड, कोई आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के लिए जा रहा है, कोई एक्सीलरेटिंग के लिए जा रहा है. तो यू हैव ऑल दिस कनेक्शंस हियर. व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू कि फर्स्ट के लिए हमने फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट अप्लाई किया है, तो समवेयर इन दिस इलेक्ट्रोड आई विल हैव अ 100 वोल्ट. अब मैं वहां पे पोटेंशियल डिवाइडर वाला डायग्राम ही बना रहा हूँ, बट यू कैन ऑलवेज मेक अ पोटेंशियल डिवाइडर diagram. If I have made, let me just make it like this one. This is connected with the last, this one, which is of 100 volt. तो 100 volt का potential इसको मिलता है.
Then you have a connection of second one, which is connected to this one, which is at 200 volt. Then you have connection to this one, which is at 300 volt. And then you have, आप क्या कर रहे हो कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, दिस इज 400 and so on. So this will be getting connected to somewhere, this will be getting connected to here, this will be here and this will be here. तो finally हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ, 200 वोल्ट है, ये मेरा 300 वोल्ट है, ये मेरा 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया, ये 700 हो गया, ये मेरा 800 हो गया, एंड दिस इज 900 वोल्ट. तो मैंने ये पोटेंशियल इस ऑर्डर में लगा दिया है. ठीक है, तो पोटेंशियल का ऑर्डर पता चल गया आपको. फर्स्ट प्लेट जो सबसे क्लोजेस्ट टू द फोटो कैथोड है, दैट इज ऑफ एट 100. ठीक है, दैट इज एट 100. द नेक्स्ट वन इज 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल लाइन एंड इट इज गोइंग टू द सर्किट. तो फाइनली जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो इस बड़े वाले प्लेट पे आने ही आने. What happens when these electron has been emitted from this particular photocathode? Let us focus on 3 electrons only. Instead, there is a possibility that it can go up to here also. There is a possibility. हम इसका डायग्राम ऐसा रखते हैं कि कोशिश करते हैं, we make a design in such a way that it does not go to this one. It has to go to the nearest electrode, which is at 100 volts. They all will come here. They all are going to come to this point. So someone has messaged, let me see the message. What? Sir, dinodes, ये वाला स्पेलिंग नहीं है, समझा नहीं. डायनोड मी 100 का इंक्रीमेंट होगा या फिक्स होगा? फिक्स नहीं होगा, इंक्रीमेंट होगा. 100 वोल्ट का इंक्रीज हो रहा है ना पोटेंशियल. What I have written? I have written 100, then 200, then 300 and 400 and so on. ठीक है, डायनोड इज दिस वन. डायनोड ये इस पे DI वाला नहीं है, DY वाला है. This is the first electrode, second, third, and the 100 potential 150 भी हो सकता है. There is no question कि भी 100 ही क्यों रखा. 50, then 100, then 150, 250 and so on. Means at any two subsequent or consecutive plate should have same potential. कहीं पे भी आप चेक कर लोगे, इसके बीच में 100 का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच में 100 का है, इसके बीच में 100 का है. If you're talking about the potential difference, then it is same for two subsequent plates, means consecutive plates. But if you look at from the first to the last, it will be increasing. It has to increasing in the order. उसको ऑर्डर में इंक्रीज करें तभी तो हम सेम पोटेंशियल पे रख पाएंगे. अदरवाइज द थिंग्स विल चेंज. जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, वो कैलकुलेशन हमारे एक पैटर्न को फॉलो करेगा. तो उस पैटर्न को हमें देखना है, वो कहीं बीच में हम गड़बड़ ना करते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे जो हम इमेजिन करते हैं कि जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन दे हैव जनरेटेड, दे डोंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी. वी जस्ट इमेजिन कि भाई आपका फोटोन जो था, जो पिछले केस से जनरेट हुए थे, when they have hit the photocathode, you just generated the electron and they don't have any kinetic energy. If we have the kinetic energy, that is feeble, that is not very big value. So starting with the zero kinetic energy, they have just generated at the plate, वहां पे generate हो गए. They will accelerate towards this 100 volt. It means each electron, before reaching to this plate, they will hit the plate with energy of 100 electron volt. आपने 100 वोल्ट पे पोटेंशियल पे इसको एक्सीलरेट किया है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 100 वोल्ट का 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई है. तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन. when it is hitting to any system or any plate, metallic plate, it can generate secondary electron. Just like a photoelectric effect. Photoelectric effect में आपका क्या हो रहा है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है. यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया अपने सिस्टम को, तो आपका जो मेटेलिक सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सरफेस पे है, तो इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स. मींस वन इलेक्ट्रॉन्स, और वो वैल्यू भी वी कैन इजिली, वी हैव द प्रॉपर्टीज कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आपके मेटल प्लेट को हिट करता है, फॉर एग्जांपल आपका प्लेट सिल्वर का बना हुआ है,
तो सिल्वर को जब हिट करेगा ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल एमिट फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन्स. वी कैन इजिली डू द कैलकुलेशन, उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है. इफ यू, और ये प्रॉपर्टीज गिवन भी होती है कि पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए क्या प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल, दिस first electron generates 3 extra electrons, and they are secondary electrons. The second one will also generate 3, third one will also generate 3. So when they hit this particular diode, the first electrode of 100 volt, they are hitting with the energy of 100 electron volt. This energy is good enough that it can generate further more 3 electron for each hitting electron. तो अल्टीमेटली 3 का कन्वर्जन कितने में हो गया? 9 में हो गया. We started with 3, now you have got 9. And with this 9, all these 9 they will look to the second electrode. यहाँ पे पोटेंशियल उसकी ज्यादा है, तो they all the 9 will hit this particular plate. अब वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब वो 9 इलेक्ट्रॉन, and they are hitting this plate again. They are produced from this plate, and we imagine that they don't have good kinetic energy. Now they again accelerated with similar potential difference. यहाँ पे 100 और 200 है, तो ये again जो hit कर रहे हैं वो भी कितने एनर्जी पे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही उनका एक्सेलरेशन हुआ है, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी जब ये सेकंड प्लेट को हिट करेंगे दे विल हिट विद द सेम एनर्जी. And all these 9, each 9 is capable of generating further 3 electrons. So you will get how many? 27. जब वो हिट करेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ से जनरेट होंगे, now they will come to 300. They will not go to the 100. We'll make a design in such a way. So they will hit this plate. Now they are 27. Now the 27 will again convert into 27 into 3. कितना हो जाएगा? अब ये नंबर मुझे नहीं पता कितना है. That will be around 90. 90 will convert into further more 3, or 3 into 27 into 3, यानी 9 into 3 कर लो. And ultimately when it hits this one, there is a very large value of, ये तो मैंने 3 सिर्फ एग्जांपल लिया था, but they are not 3, they just generate 30 to 40 electrons when they hit the, means started with only 3 electrons, now you are hitting with a good amount of electron. You can do the calculation में भी कोई मुश्किल नहीं है. We can have the numbers. अगर आपको मैंने डायनोड्स का वैल्यू दे दिया कि भाई इस पे इतने डायनोड है, 10 डायनोड लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर उसमें, स्टार्टिंग डायनोड से एंड डायनोड पे 10 लगे हुए हैं. For every dynode, when they are hit with the electron having energy of 100 electron volt, they can produce 50 more electrons. So you can easily calculate how many electrons will reach at the last particular anode. The process is clear. What is happening here? We have an electrostatic potential here, and they're starting with a very few number of electrons. They hit with the nearest electrode with a good amount of energy, and that energy is nothing but the potential difference between the two whatever the plates you are having. तो दो भी कोई भी subsequent plates हैं उनके बीच में हमने potential same रखा हुआ है. तो जब same रखने से क्या है, we are getting similar kind of multiplication for each electrode. And how many electrodes are there, how many diodes are there, we can easily calculate that number कि हमारे पास कितने electron finally हमारे पास collection हो रहा है. That we can easily do. उसमें कोई doubt है? There is a question. So just take the question. की question क्या है? I will give you a calculation. 200 volt से increase कर सकते हैं. Yes, you can increase. You can make it 300 volt, 400 volt. That will depend upon your selection. आप कितना increase करना चाहते हो, आपका जो ट्यूब है वो कितना sustain कर सकता है potential. That all the things you have to take care. So normally 100 work for us. 200 can also work for. उससे ज़्यादा करते हैं तो थोड़ी problem आती है. So we just switch to certain 100 or 200 value only. So that yes, you can do that. या कोई और value. 100 is good enough to generate furthermore. 100 electron volt अगर है ना energy एक electron के पास तो बहुत है. It is not a very low value. It is a good value. So if I give you a question कि भाई इतने मेरे पास electrode हैं और जो every electrode पे we get around 30 और उसका एक नंबर भी है. फॉर एग्जांपल जो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है ना, लेट मी जस्ट मेक इट हियर.
if electron is hitting here and you are getting a extra electrons, these are secondary electrons which are coming. This is the primary electron, you can say. The primary electron ki energy is given to you. E, it is given to you. And to produce these secondary electron, how much energy is required? To produce one secondary electron, that is also given to you. So you can easily calculate. So normally ये value आपकी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी और जो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का जनरेशन है दैट इज 2 to 3 इलेक्ट्रॉन दैट इज हार्डली दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी से भी हिट करता है तो एटलीस्ट इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वन इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए दिस इज enough energy. It is not a big value. This is very small. So how many electrons will be generated? Can you just tell me for one plate? That will be if you divide by 2. So that will be how much? This is electron volt. This is electron volt. So you get 50 electrons, and they are secondary electrons. So secondary electron कितने generate हो गए? 50 from one plate, and this 50 is due to only one electron. If you have starting electron 10, then you have to multiply with that also. तो आपके एक प्लेट पे 500 का जनरेशन के चांसेस होंगे. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आए. एक बार शायद एक बार आया हुआ है कि मे बी मुझे ध्यान नहीं कि क्वेश्चन क्या था, बट देयर वाज अ क्वेश्चन दैट this number of electrode is connected to the photomultiplier tube and their potential is this much, and any electron which is having certain energy means उसमें लिखा भी होगा कि if it is accelerated towards to energy of 100 electron volt, and how many secondary electron is produced for each plate, and finally what will be received at the final plate if we have these are the potential and we require 2 या शायद 3 दिया था उन्होंने या 4 दिया था. आई डोंट रिमेम्बर दैट. मेरे ख्याल से 1 साल से पहले आया था. तो अराउंड दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी दे रखी है, आपके प्लेट का डिफरेंस दे रखा है. You can easily predict and then you go on multiplying. There is a formula also. Directly power का formula लगा सकते हो because यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो क्या है आपका 3 then 3 square तो 3 क्यूब एंड सो ऑन. तो स्टार्टिंग विथ 3 तो आपने क्या किया 3 के ऊपर पावर किसका लगाया है? नंबर ऑफ डायनोड्स. तो जितने नंबर ऑफ डायनोड्स है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया. तो इफ स्टार्टेड विथ 3 एंड फर्स्ट प्लेट को हिट करेगा तो 3 × 3 किया आपने तो 3 स्क्वायर हो गया. यहाँ पे क्या उसका स्क्वायर हो गया एंड वट एवर मीन्स ये 3 नंबर आपका चेंज हो सकता है. अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर आपको 50 दे दिया देन यू पुट द पावर. तो यू कैन डू द कैलकुलेशन. मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. आई कैन गिव यू अ नंबर. लेट मी गिव यू द नंबर एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द फाइनल फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो आपके सामने बना है. यानी 900 मेरा लास्ट वाला एक इलेक्ट्रोड है तो वहां पे मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. लेट अस डू द कैलकुलेशन. पोटेंशियल यही है आपके पास और आपका जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए जनरेशन के लिए आपकी चाहिए एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी एंड वी हैव स्टार्टेड विथ से 30 electrons. So sorry, 30 electrons. Let me write in 30 electron. Then how many you will receive at the final electrode that is having 900 volt potential? Just do the calculation. एक बार जरा नंबर देखते हैं कि कितना आता है. Your starting number is 30 electrons and each plate means each secondary electron need 2 electron volt energy to be ejected. Then what is the final number of electrons you are receiving? जरा कैलकुलेशन करो एक बार.
कितना है, कुछ वैल्यू आ रहा है? डू द कैलकुलेशन इन स्लोअर वे, एक एक इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन करो. You have started with 30 इलेक्ट्रॉन्स. फिर फर्स्ट का कैलकुलेशन करो. फर्स्ट डायनोड्स पे क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट डायनोड पे आपको क्या मिलेगा? 30 means after this has hit this diode, then 30 into each is going to produce how much? 100 is applied. तो 100 के लिए आपके जो 30 इलेक्ट्रॉन है, they all have 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी and each is producing how much? 50. so 30 into 50 हो गया. तो फर्स्ट प्लेट को जब लीव करेंगे इलेक्ट्रॉन, so they will be around this much number of electrons. पहले 30 थे, हर एक 30 ने 50 जनरेट किया, तो 30 into 50 हो गया. सेकंड पे जाओगे, ये तो मैं वन बाय वन कर रहा हूँ कैलकुलेशन, बट वी कैन इजिली गेट द फॉर्मूला आल्सो, दैट इज नॉट डिफिकल्ट. सो दिस इज this number 30 into 50. Again you have 50 because they are going to produce 50 more. Each is going to produce 50 more. तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. अब एक बार जरा थर्ड लिखते हैं. थर्ड के लिए क्या होगा? दिस नंबर into 50 into 50. So for nth, nth डायनोड का क्या फॉर्मूला होगा? 30 into 50. थर्ड पे 50 के ऊपर 3 का पावर था ना, तो nth के लिए n का पावर हो जाएगा. और we can write in a general way that alpha x to the power of n. This is the number of electrons. What is alpha? Alpha is the starting number. What is x? X is the how much secondary electron you are going to get. That will depend upon the how much energy required to produce one secondary electron. And what is n? N is the number of anodes or number of diodes. Is it clear? Alpha is number of electron, or you can say electron from photo cathode. X is what? X you can say something like efficiency or anything I've written somewhere. X is okay. X is gain of one, gain of each डायनोड. यानी एक पे वो कितना जनरेट कर सकता है? 50 कर सकता है, 30 कर सकता है, 40 कर सकता है. नंबर कैन वेरी. एंड n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ डायनोड्स. इस केस में कितना है आंसर? एनीवन हैज मैसेज? 10 to the power of 15. Okay, that number is good. And if you want to convert into a current, if you collect these in a hardly a microsecond, so what will be the current? अगर मैं सारा जो इलेक्ट्रॉन मेरा जनरेट हुआ है 10 to the power of, someone has calculated 15 electrons has been generated, only 9 electrodes we have used, only 9 diodes have been used, and all these electrons are getting collected within a microsecond. Then what is the current? करंट क्या हो जाएगा? इसको हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करना है ना, ये तो सिर्फ नंबर है. नंबर को हमें 4 से मल्टीप्लाई देता हूं, हमें चार्ज मिलेगा, और चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज अ करंट. सो हाउ मच दिस नंबर इज? 10 टू द पावर ऑफ 15 इंटू 1.6 को मैं भूल जाता हूँ क्योंकि 1.6 को मैं 1 ही मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए. 10 टू द पावर ऑफ -19 एंड डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर ऑफ -6. सो व्हाट इज द करंट वैल्यू? ये ऊपर जाएगा. 15 और 6 कितने हो जाते हैं? 21. 21 में से ये हट गए, तो अराउंड 100. This is very large value. This current is huge value, 100 ampere. That is not feasible. ये एक रफ कैलकुलेशन था, इसलिए नंबर आ गया. हार्डली मिली एम्पियर से टेंस ऑफ मिली एम्पियर करंट आता है आपके फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में या माइक्रो में आता है. ठीक है. सो दिस इज अ नॉट अ वेरी फीजिबल वैल्यू.
So now this is a photo multiplier tube is done. उसका descriptive diagram आपको मैंने बता दिया, copy में आपको इससे better मिल जाएगा. Or what the process is followed, that I have explained you. One calculation we have done. We will do one more calculation in the tutorial class concerned with the output current. If the radiation rate is also given to you, अगर radiation का rate given है तो और collection time given है आपके device का, तो करंट का वैल्यू या पल्स की वैल्यू कैसी होगी, तो दैट वी विल डू द कैलकुलेशन. वन गुड क्वेश्चन इज देयर इन द नॉल बुक, सो दैट वी विल डू. ओके. एंड आपको सिंटिलेटर का भी प्रोसेस मैंने बता दिया कि सिंटिलेटर के आपके प्रोसेस क्या है. पहले आपका सिंटिलेटर वाला मटेरियल है जिसमें आपके फोटोन जनरेट होते हैं. These photon get reflected from all the three surface. They hit the cathode, photocathode, and photocathode generate electron, and these electron get multiplied and they are getting collected at the output circuit. So we have done with these two. Now we go to the type of scintillator. तो वो टाइप क्या है? दो डिफरेंट टाइप के बेसिकली है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है. दोनों का प्रोसेस मेरे ख्याल से एक दूसरा वर्ड से मैं ओपन कर देता हूँ. दोनों के प्रोसेस भी थोड़े से डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच दीज सिंटिलेटर्स आर वर्किंग, मींस हाउ दीज फोटॉन्स आर बीइंग जनरेटेड. तो प्रोसेस तो एक आइडियल जो प्रोसेस है वो वही है कि यू हैव टू मेक द एटम इनटू एक्साइटेड स्टेट. बट व्हेनेवर यू हैव अ सॉलिड और अ लिक्विड, यू डोंट हैव एटम्स, यू हैव मॉलिक्यूल्स. तो आपके पास जब भी आप सॉलिड या लिक्विड सिस्टम में जब क्रिस्टलाइज करते हो मटेरियल्स को, तो यू ऑलवेज हैव अ some kind of molecule formation. So first we will discuss about the inorganic system. And inorganic system में हमारे पास जो category है, means let me just share the file to you. Okay, so we will discuss about the type of scintillators. So the first one is organic. Organic scintillator का basic जो mechanism है, always we will discuss in two different way. किसी भी scintillator के लिए हम दो डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज द मैकेनिज्म एंड देन देयर इज एग्जांपल. एक्चुअली एक है मैकेनिज्म जो नॉर्मली एक्सप्लेन करने को आता है, दैट इज नॉट वेरी बिग क्वेश्चन. दो 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा. व्हाट द मैकेनिज्म इज फॉलोड फॉर अ ऑर्गेनिक scintillator. So you must have seen this kind of picture somewhere. जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है तो देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर of the excited state and the ground state. और यहाँ पे कुछ ऐसे बैंड्स फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल या रोटेशनल स्पेक्ट्रा. ठीक है, ये एटम का नहीं है, ये किसका है? मॉलिक्यूल का है. and these are very small, they are in the electron volt or fraction of electron volt energy, and this is tens of electron volt. दोनों में फर्क है, जो एनर्जी का वैल्यू है दोनों में डिफरेंस है. So what the process is that when the ions come into the scintillation or scintillator material, the atom do the interaction, means they normally do the interaction by the Coulomb interaction, and the electron is being pulled from the lower orbit somewhere here in the molecule to the higher one. Sorry, this line thoda वैसे चला गया, but this is goes to somewhere here. And then it can do the drop back, means after doing certain vibrational or rotational means some kind of vibrational or rotational energy conversion, then it can back jump into the ground state. तो जब भी ये jump करेगा, it will emit a photon of Helium. So this photon is required. हमें मॉलिक्यूल को आयोनाइज नहीं करना है, हमें मॉलिक्यूल को
सिर्फ एक्साइट करना है। when it is doing excitation then only this photon will come out. अगर हमारे पास बिल्कुल ही if it is goes into ionization then we don't have photons, there is a not a possibility of getting photon, then they can go somewhere else. So we have to do this kind of thing. हम क्या करते हैं, ground state से normally first excited state में we just do the excitation. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है लोअर स्टेट से जंप किया और उसने फिर वापस ड्रॉप बैक किया, ड्रॉप बैक करके हो सकता है जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज नहीं किया हो, क्योंकि बीच में हमारे पास स्मॉलर एनर्जी स्टेट्स भी थे विच हैज बीन consumed by this electron. तो थोड़े थोड़े यहाँ पे ड्रॉप भी हुए. That drop we are not able to measure, but this big drop which is from this to this we are getting. Means जो उसने absorb किया और जो release किया, it doesn't mean कि they are same value. They can be different value. So this is a basic mechanism. So electron has means at molecule has to consume the energy from the radiation, and it has to goes into the excited state, and again it back to the ground state and emits a photon, and this is how the photon is generated. तो इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में तो नहीं करते हैं, बट डायग्राम बना दोगे और 2 स्टेप्स लिख दोगे, दैट इज हार्डली गोइंग टू डू एनी बिग कि मार्क्स कोई डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. डायग्राम बनाओ. अगर स्टेप्स बोलोगे तो स्टेप्स आई हैव रिटन हियर, so let me just read out the steps for you. The incoming radiation interacts with the many molecules, losing a few electron volt to each of the interaction as it's excite the molecules. And second, many possible vibrational state can be excited. These vibrational state or electronic state, they can be something like उसमें मैंने value लिख रखी है 1s या 2s या 2p किस में गया है, that I have written there. But now they have to come back to the ground state, and when they are coming back to the ground state, they will emit the photon. नॉर्मली जो वाइब्रेशनल स्टेट का ट्रांजिशन होता है वो नैनो सेकेंड्स में होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मीन्स 10⁻⁻8 और -7 सेकेंड्स का होता है. तो वी नीड दैट काइंड ऑफ टाइम एंड वी नीड गुड अमाउंट ऑफ फोटोन. ठीक है, जस्ट एक बार होल्ड डाउन करना. ओके, सो दिस अ बेसिक मैकेनिज्म. वो स्टेप्स मैं नोट्स में दे दूंगा, तो यू कैन इजीली राइट. कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बच्चे भी लिख लेते हैं. आप ये सब 12th में भी पढ़ चुके हो कि क्या प्रोसेस है. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स. ये तो मैकेनिज्म हो गया आपका. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं आज खत्म ही कर देता हूँ. देन वी विल गो फॉर द सॉलिड स्टेट. और सॉलिड स्टेट में भी हमारा इस सैटरडे तो क्लास नहीं होगी, सैटरडे हमारी छुट्टी है. सैटरडे छुट्टी है क्या है? सैटरडे क्या है? क्या है सैटरडे, बताओगे? ये सैटरडे, ये भी नहीं बताओगे सैटरडे है क्या? छुट्टी है तो क्यों है? हाँ? एंथ्रासीन इज एग्जाम्पल. अगर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि राइट 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक scintillator, एग्जाम में हमेशा आता है कि गिव 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक scintillator. तो फॉर ऑर्गेनिक scintillator यू विल राइट एंथ्रासीन, स्टेबलिन. स्टेबलिन. किसी ने मैसेज किया कि किस चीज की छुट्टी है, मैंने छुट्टी के लिए पूछा था. इट इज हॉलीडे फॉर व्हाट? ओके, लेट मी जस्ट, मेरा ये मैसेज बॉक्स आई एम नॉट एबल टू सी. इस सैटरडे आप लोगों को ट्यूटोरियल शीट नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले जो 2 क्वेश्चन रह गए थे दैट यू शुड गो थ्रू. सर छुट्टी है बस, काफी है. अच्छा, इतनी छुट्टियों के बाद भी अभी छुट्टी का इंतजार रह रहे हैं, मतलब छुट्टियों से दुखी नहीं हुए अभी? हैं? नो सर. मतलब इतनी छुट्टियां, मतलब 1.5 साल की छुट्टियां कभी जिंदगी में नहीं मिली होगी. स्कूल टाइम में भी नहीं मिली होगी कभी जिंदगी में. 1.5 साल की छुट्टी लगातार.
पढ़ रहे हैं वो ठीक है। अब क्लासेस आप ऑन कर लेते हो, आउट ऑफ 70 15 to 20 आर अटेंडिंग, नाउ इट इज 10। तो वो तो सारे छुट्टी पे ही हैं पिछले पूरे सेमेस्टर से। मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं कभी। प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में आते हैं, दे गिव द प्रेजेंटेशन, दे जस्ट गो कि भाई प्रेजेंटेशन हो गया, खत्म करो। तो इतनी छुट्टियां के बाद अगर छुट्टी का इंतजार है तो समथिंग टू बी, समथिंग हैज टू बी इन योर माइंड। फिर भी छुट्टी चाहिए। गांधी जयंती है तो साफ सफाई कर लेना घर की, ठीक है। थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए घर की भी। गांधी जयंती पे लास्ट टाइम स्टार्ट किया था मोदी जी ने, लास्ट टाइम तो नहीं किया, 2014-15 में ही किया था कि थोड़ा स्वच्छता अभियान किया था। तो बस याद दिलाना था कि हाँ छुट्टी है तो जस्ट क्लीन योर हाउस। तो सैटरडे आपको इसी के लिए छुट्टी दी गई है। ओके, सो दे आर टू एग्जांपल्स नॉर्मली। ये बड़े फेमस एग्जांपल है, एंथ्रासीन एंड स्टेबिलिन। So they are used as a organic scintillator. They are pure organic crystals. Actually, they are in the form of crystal. Then we can even use another kind of. We have some organic solutions also. Organic solution means they are in the form of solid. Crystal के form में they are in the form of solid. So this is solid form में. They can be of solution, means something you have solvent and you have dissolved the solute and the solute is acting as a scintillator. So you have organic solutions also. You can have a plastics, स्पेशल प्लास्टिक्स, दे कैन वर्क एज अ सेंटिलेटर। प्लास्टिक में कभी ध्यान देना, फ्लोरोसेंस बड़ा इजीली आपको मिल जाता है। एक मे भी अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हों जो दूध बॉटल से पी रहे हो अभी 2 साल 3 साल के, अगर किसी के घर में हो, तो मे भी आपने कभी ध्यान ना दिया हो, जो आपका दूध का बॉटल होता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस दिख जाएगा। लाइट बंद होगी अंधेरे के टाइम में, इफ यू रब दैट, मतलब कई बार हम बॉटल पकड़ते हैं और हल्का सा उसको रब करोगे ना, तो यू विल सी द लाइट। दैट लाइट इज वेरी फेंट, बट यू विल सी दैट। तो वो जो प्लास्टिक है ना, दे ऑल्सो परफॉर्म एज अ सेंटिलेटर। सो कुछ स्पेशल प्लास्टिक है विच परफॉर्म सेंटिलेशन, वेन देन वी कैन हैव अ थिन फिल्म फॉर्म। देर आर सेवरल थिंग, बट एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो इन दोनों का नाम आप लिख सकते हो। इवन यू कैन राइट द प्लास्टिक सेंटिलेटर एंड थिन फिल्म में भी है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारा लोडेड सेंटिलेटर भी है। तो देर आर सो मेनी, बट एग्जाम्पल्स में ये दोनों तीनों को आप लिख सकते हो। देर इज अ प्लास्टिक, स्टेबिलिन एंड एंथ्रासिन, दे आर द गुड सेंटिलेटर। मैक्सिमम दे आर यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक सेंटिलेशन। प्रोसेस मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया और आपको मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए। नाउ वी गो टू द दिस इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म और उसका कुछ एग्जाम्पल। इनऑर्गेनिक मीन्स समथिंग विच इज नॉट हैविंग अ कार्बन। इनऑर्गेनिक का मीनिंग तो यही है। ऑर्गेनिक क्या है? कार्बन के सारे कंपाउंड को वी आर ऑर्गेनिक, एंड आवर some of the devices that we use, they are inorganic because we are made up of carbon but they are not made up of carbon. तो कार्बन जिस जो भी आपके सिस्टम है जिसमें कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन से कोई चेन फॉर्मेशन हो रहा है, that is organic. And anything which is made up of any other element, maybe metal, maybe non-metal, maybe combination of metal and जैसे NaCl है, NaCl is or inorganic system. शुगर इज ऑर्गेनिक सिस्टम। तो जिसमें भी कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्पोजिशन है, so that you call it as ऑर्गेनिक। so whenever you have an inorganic system, that is something which is insulator or maybe something which is metal also। तो ऑर्गेनिक नहीं है बट वो मेटल या इंसुलेटर है। इट मीन्स दे विल फॉर्म समथिंग लाइक अ लैटिस, दे विल फॉर्म अ बेटर क्रिस्टल। जो ऑर्गेनिक सिस्टम में आपके पास क्रिस्टल नहीं होते हैं, एग्जैक्टली दे आर नॉट एग्जैक्टली एज अ क्रिस्टल, समथिंग क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म, जैसे शुगर क्रिस्टलाइज हो जाता है, बट वी डोंट से दैट इज अ क्रिस्टल। वो क्रिस्टलाइज हो रहा है बट दैट इज नॉट अ क्रिस्टल। इफ यू नो दैट कि उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह नहीं है। दिखने में हमें लगता है कि चीनी के क्रिस्टल्स हैं बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एज अ क्रिस्टल। फिजिक्स के हिसाब से वो क्रिस्टल नहीं है। बट सॉल्ट, सॉल्ट इज अ क्रिस्टल। सॉल्ट आपको ज्यादा पाउडर फॉर्म में दिखता है शुगर के रिस्पेक्ट में, बट दैट इज लाइक अ क्रिस्टल। एग्जैक्टली यू कैन सी द क्रिस्टल। आप उसको अगर सॉल्ट को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यू विल सी अ परफेक्टली, you can see very means very ordered way of system। आपको टेट्रागोनल या स्क्वायर या इस तरह का सिस्टम आपको दिखेगा, और उसको फर्दर ब्रेक करोगे
And if you go with a better microscope such as XRD में अगर आप देखते हो उसे, you will see the crystal structure कि वो उसका एक डिपिक्शन होगा, आपको दिख जाएगा. तो और इनऑर्गेनिक सिस्टम फॉर्म अ crystals. And whenever you have an inorganic system, when there is a crystal, then you have a band formation. जैसे metal, non-metal और semiconductor. तो क्या होते हैं? Band formation होता है. When you have two atoms when they are coming close to each other, then some of the valence band they means valence ये मैंने कभी एक्सप्लेन किया आपको कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है? मे बी सम टाइम मैंने कभी एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि बैंड फॉर्मेशन कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि बैंड फॉर्मेशन होता क्या है. हम पढ़ लेते हैं कि कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, ये बैंड होता है, वो बैंड होता है, फॉरबिडन बैंड होता है. बट व्हाट दीज बैंड्स आर, what they are energy levels. एक आंसर बच्चे ये देते हैं कि they are energy levels. But why the energy levels have a different picture when these atoms are in means you can say in a gaseous form. जब gaseous form में होता है तो वो different picture show करता है. जब उसे हम solidize करते हैं, crystallize करते हैं और दो atoms को very close when we bring them, they form this kind of a structure. तो किसी भी inorganic system में you will always have at least three different बैंड फॉर्मेशन. सो एक आपका रहता है जिसको आप वैलेंस बैंड कहते हो, एक आपका क्या रहता है? कंडक्शन बैंड होता है, एक आपका क्या होता है? फॉरबिडन बैंड होता है. ये हर एक सिस्टम में होगा, मेटल में भी है, इंसुलेटर में भी है और सेमीकंडक्टर में भी. बट ये जो गैप है ना, गैप से हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज दैट. इफ इट इज ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैप हो रहा है दे आर मेटल. अगर ये गैप आपका रफली स्टार्टिंग विद से 1 electron volt to say 4 electron volt, then you call it as an insulator. When the gap is more than 4 electron volt, then you say that, sorry, this is a semiconductor, then you say a semiconductor, and then you say an insulator. तो हम कैटेगराइज इस बैंड के जो बैंड गैप है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है उससे हम कैटेगराइज करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो मेटल है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है. तो किसी भी इनऑर्गेनिक में यू विल ऑलवेज हैव दीज थिंग्स. they are nothing else, they are just the orbits. इसमें कुछ भी नहीं है यार. ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स ही हैं. वैलेंस बैंड में ऑर्बिट्स कौन से हैं? विच आर फिल्ड. यानी किसी भी एटम में जो फिल्ड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके जो उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको वैलेंस बैंड बना के देता है. मीन्स हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, तो सॉलिड के केस में वो वैलेंस बैंड हो जाता है. ऑल दोज ऑर्बिटल्स विच आर एम्प्टी, they are free, they don't have electrons, they become conduction band. ठीक है. और इनके बीच में गैप होता है अच्छा खासा. यहाँ पे कोई ऑर्बिट नहीं है, बट देयर इज अ बिग गैप. मींस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वैलेंस बैंड and the lowest value of conduction band, that difference is called as forbidden band. They go away and they comes near to the nucleus. ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं. And there is a very simple way of conduction because these electrons are stick to their orbit, stick to their system. वो अपने एक particular system यानी particular nucleus से connected है. They are not free electrons, but if you give energy enough to these electrons, they can jump to this conduction band. And when they're jumping to the conduction band, which is very far from the nucleus, so now they are like a free electron. So whenever the electron jump from the valence band to the conduction band, your electron become free and that can do the conduction. That is why it is called as conduction band. यानी जो भी इलेक्ट्रॉन आपके इस बैंड में होंगे वो कंडक्ट करेंगे. They will, if you apply electric field in the system, they will start flowing from one nucleus to other nucleus, and this is doing like a orbit change. इस ऑर्बिट के इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट से निकल कर दूसरे न्यूक्लियस के ऑर्बिट में जा रहा है. वो कभी फ्री नहीं घूम रहा है. हमेशा ये ध्यान रखना कि दे आर नॉट फ्री, but these orbits have very less effect from these nucleus. तो इस ऑर्बिट में easily they can transfer. तो एक न्यूक्लियस के ऑर्बिट से दूसरे तीसरे and go on. So that is something, it can be treated as a free. So when you apply the electric field, they can move freely. So this is what is required. अब हमारे पास रेडिएशन जब आएगा, जो ऊपर का मैकेनिज्म था उसमें एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, इसमें एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहा है. बट व्हाट हैपेंस, the electron in the conduction band, they take the energy from the radiation and they go into the conduction band. And what happens,
If you don't apply the electric field, then they are not going to move. After certain time means what they will do, they will back to the बैलेंस बैंड. बहुत देर तक उसमें नहीं रहेगा. अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यूटिलाइज नहीं किया तो इट हैज टू कम बैक, बिकॉज आपकी वैकेंसी क्रिएट हो गई है. वैकेंसी जब क्रिएट हो गई है, यहाँ पे होल आ गया है, तो होल विल ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. सो अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो दैट विल जंप बैक टू दिस पर्टिकुलर होल एंड इट विल एमिट अ फोटोन. जैसे आपका सेमीकंडक्टर में होता है. फोटो डायोड आपने देखा है, एलईडी देखा है. फोटो डायोड में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे टेक अप द एनर्जी, they just go from the your depletion region, they go into the n and p region and you collect them, so you get a current. और एलईडी में क्या होता है, you have a already you have a these electron and holes and you combine them and they emit a radiation. So this is what is happening. This is something like a photo diode की तरह वर्क कर रहा है. आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए कंडक्शन बैंड में, बट यू हैव नॉट यूटिलाइज, so they will again drop back to the valence band and they will emit a radiation. So this radiation is actually needed. दोनों केसेस में हमारे पास रेडिएशन का ही एमिशन हमारे पास इंपॉर्टेंट था, जो कि सेंटिलेटर मटेरियल का बेसिक प्रोसेस है. यू हैव टू जनरेट अ लाइट फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशन. एंड हाउ दैट विल डन, इनऑर्गेनिक में हमारे पास थ्रू दिस बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के पिक्चर से होता है. और उस केस में हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट और वो डी एक्साइट करता है, तब वो जनरेट करता है. ओके, द एग्जांपल्स वी विल डिस्कस ऑन द मंडे. एग्जांपल्स इसमें थोड़े वैसे ज्यादा नहीं है, बट एग्जांपल्स के साथ हमारे पास वेवलेंथ भी है. पिछले केस में वेवलेंथ के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, बट हियर वी हैव अ वेवलेंथ रिलेशन. मींस आपके जो फॉरबिडन गैप है, इस गैप के अकॉर्डिंग आपके वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के. दैट एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. एंड एक चीज और आपने देखी होगी, अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता है या प्योर सिस्टम होता है, तो यू ओनली हैव द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. बट इफ यू डू द इम्प्योरिटी एडिशन, मींस आप जिसमें इम्प्योरिटी, तो एन टाइप पी टाइप के फॉर्मेशन होते हैं. सो यू हैव अ different more level which is generated somewhere near to the valence band and near to the conduction band. These are called as, इसको क्या कहते हैं, ये जो नए लेवल्स बन गए इनको क्या कहते हैं, इनका नाम होता है सेमीकंडक्टर में कुछ, इफ यू रिमेंबर. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अलावा इनका नाम क्या होता है. these level are very close and they are somewhere, some are near to the conduction band and somewhere near the valence band, and they are generated when you do the impurity. यानी n type p type में ये लेवल मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे, प्योर में नहीं मिलेंगे. प्योर सेमीकंडक्टर में सिर्फ दो ही होंगे, वैलेंस और कंडक्शन होगा, फॉरबिडन होगा. बट इम्प्योर में यू हैव अनदर थिंग. what the name is given to these levels, you remember? फर्मी. हाँ बोलो. if you add impurities what happens, थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि फॉरबिडन थोड़ा सा डिक्रीज हो गया ना. अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसी चांस में, तो वो यहाँ पे जंप कर सकता है. तो इट गोज समवेयर. इफ इलेक्ट्रॉन जंप हियर, इट कैन बैक टू हियर एंड देन इट विल बैक टू हियर. तो उसके बाद थोड़े से और लो एनर्जी के फोटॉन्स एमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं व्हेन यू हैव दीज लेवल्स. दीज लेवल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर एंड डोनर लेवल. याद है, एक्सेप्टर लेवल एंड डोनर लेवल. In the same sense, here also we have impurities in these crystals and we call these as a activator levels. तो ये एक्टिवेटर की तरह वर्क करते हैं. तो कई बार आपके फोटोन यहाँ पे जाकर के भूल जाते हैं कि मुझे वापस जाना है, वापस जाने में बहुत मेहनत लगेगी, मुझे इतने बड़े फोटोन को जनरेट करना है. तो it do a slow process, it go to this particular level then it back to this one. तो that is also it helps. कई बार impurity आपको help करता है आपके कंडक्शन में. जैसे n और p टाइप आपके ज्यादा कंडक्टिंग होते हैं rather than your pure semiconductor. Pure semiconductor भी कंडक्टिंग है, बट वो लेस कंडक्टिंग है with respect to your impure or when you have added the impurities. So that increase your chance of getting the electron to be going into the conduction band. तो वो चांस को इंक्रीज करता है. इंक्रीज क्यों करता है, इट एड अप एक्स्ट्रा स्टेयरकेस टू दीज लेवल्स. तो नीचे की तरफ इसके और इसके ऊपर की तरफ ऐड कर देता है स्टेयरकेस, तो यू कैन इजिली जंप, द इलेक्ट्रॉन कैन डू द जंपिंग. सो व्हेन यू ऐड द इम्प्योरिटी, these level improves. तो हम इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड वी विल फिनिश ऑफ विद द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आल्सो. सॉलिड स्टेट भी आपने अच्छे से पढ़ ही रखा है. एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, इम्प्योरिटी क्या होती है, और मास, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये सारा पढ़ रखा है. तो वही मुझे एक्सप्लेन करना है. तो वी विल फिनिश दिस ऑन मंडे एंड वी विल स्टार्ट विद द लास्ट
unit from Tuesday, that is particle physics. यानी मेरा लगता है दिवाली आने से पहले ही खत्म हो जाएगा सिलेबस तो थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ मैं. I will try to make the some animation to you for these things. तो वो मैं डालूंगा, ठीक है. So we will start with the particle physics. Particle physics में थोड़ा टाइम देंगे हम and we will finish off our syllabus. Okay. चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. 3 बजने में 2 मिनट ही है. We just finish off. I stop the recording. And now you are hardly 11. So this is what is happening. अब फिर छुट्टी मांग रहे हो तुम लोग. विकास को छुट्टी चाहिए बहुत सारी. So bye bye for now. I have stopped the recording.